Okay, is my screen visible? Yes, sir. Okay. Uh, Before starting today's session, I would like to announce something. Uh, all the FY students will have exam that is just a aptitude test like. So that exam is on Monday for half an hour. आपको 30 minutes मिलेंगे. उसमें 30 questions होंगे and you have to solve that 30 questions. So क्या होता है? Every year we take bridge course. तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनका आईटी में नहीं लिया होता है या फिर कंप्यूटर साइंस जो है वो 11th 12th में नहीं लिया होता है एंड देयर इज सम गैप बिटवीन द नॉर्मल स्टूडेंट एंड दो स्टूडेंट सो व्हाट वी डू वी परफॉर्म सम टेस्ट तो क्या होता है कि आपको वो एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपको अच्छा स्कोर किया तो आपके लिए वो ब्रिज कोर्स का सेशन कंपलसरी नहीं होगा बट फॉर दो स्टूडेंट who find it difficult to cope up with the IT syllabus उनके लिए ये जनरली होता है ब्रिज कोर्स बोलते हैं वो एक हफ्ते का कोर्स होता है जिसमें आपको जो बेसिक्स है जो बेसिक स्किल्स लगते हैं उस वो पढ़ाते हैं हम लोग तो वो कोर्स जो होता है उसके लिए कंपल्शन नहीं है बट जिनका स्कोर लो आता है वो टेस्ट में सरी करते हैं तो दैट टेस्ट विल बी परफॉर्म्ड ऑन मंडे और मंडे के बाद ही होगा वो उसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स के थोड़े क्वेश्चंस रहेंगे कुछ लॉजिक के ऊपर रहेंगे लॉजिकल स्किल्स जो जनरली एप्टीट्यूड लेवल में क्वेश्चंस होते हैं ना जो एग्जाम में देते हो बैंक एग्जाम वगैरह वो टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे लॉजिक के फिर आपका जो कंप्यूटर का जो है बेसिक कंप्यूटर स्किल उस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे सो देयर विल बी अ मिक्स क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस विल बी देयर और वो गूगल फॉर्म से लिया जाएगा टेस्ट ओके so be ready be prepared something for that exam okay so that is the announcement let's move on to our current topic so last time we have seen the conditional statement क्या होता है it is of the form if p then q or we can write this as p implies q that is the conditional statement over here so this is the conditional statement form if p then q or you have this form p implies q this conditional statement is denoted by p implies q in this particular form and usko define kaise kiya gaya hai we have defined this statement it is false when both p and both when p is true and q is false otherwise the given statement is true the first statement P is known as hypothesis and second statement Q is known as conclusion. So हमने इसका truth table भी देखा था. What is the truth table? When P is true, Q is false, the value of this conditional statement is false. Otherwise, the value is true. Okay? So इसका एक ही false condition है, बाकी सब जगह पे true है. तो इसीलिए ये बहुत ही interesting statement है कि if 0 is equal to 1, then 1 is equal to 2. If 0 is equal to 1, then 1 is equal to 2. So इसका hypothesis क्या है? What is the hypothesis over here? Hypothesis is 0 is equal to 1. Either it is true or false. Hypothesis is false. 0 is equal to 1 is false. What is Q? Q is a statement 1 is equal to 2. Can you prove this statement? मैं इसका प्रूफ लिख सकता हूं एंड इसका प्रूफ करेक्ट आएगा क्यों करेक्ट आएगा if 0 is equal to 1 then 1 is equal to 2 a true statement है this statement is true. Always remember that when your hypothesis is false this implies that P implies Q is always true. Why it is so?
यहाँ पे P implies Q का ट्रूथ टेबल देख, जब आपका P फॉल्स होगा, व्हाट इज द रिजल्ट? जब P फॉल्स है, that is P is false over here, both the statement P is false, what is the result? P implies Q, result is true. So always remember, the conditional statement with false hypothesis is always true. Okay, so this is about the thing. Again, Sheikh Akmal, please unmute yourself. Sheikh Akmal, why you have not logged in? शेख अकमल, शायद वो चला गया। ठीक है, एनीवेज, ओके। तो इसको प्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका है। आई कैन राइट द प्रूफ वेरी इजीली। इफ 0 is equal to 1, then 0 plus 1 is equal to 1 plus 1, that is 1 is equal to 2. Okay, so if assume करके चला कि 0 is equal to 1, I can easily prove 1 is equal to 2. बट मेरा हाइपोथेसिस फॉल्स है। अगर मेरा हाइपोथेसिस फॉल्स है तो मेरा कंक्लूजन है जो फॉल्स ही आने वाला है। ओके, कंक्लूजन कभी कभी ट्रू भी आ सकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉल्स आ सकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो कंक्लूजन अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है तो आपका ओवरऑल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू आने वाला है। ओके, सो दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट मी से आगे कुछ लिखा है क्या मैंने? ठीक, लेट अस गो ऑन टू अहेड। मैंने आपको एक बोला था, जब मैंने आपको 3 रिलेशन सिखाए, दैट इज निगेशन, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। निगेशन, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। ओके, और ये जब मैंने सिखाया था तो मैंने आपको बोला था कोई भी स्टेटमेंट इन तीनों सिंबल यूज करके लिखा जा सकता है। कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट यू रिक्वायर ओनली दिस 3 सिंबल्स, ओनली दिस 3 सिंबल। सिमिलरली P implies Q जो स्टेटमेंट होता है वो भी ये सिंबल से लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखा जा सकता है? निगेशन P और Q। तो P implies Q is identically equivalent to negation of P or Q. So let us see why it is so. Consider this statement. Either you get to work on time or you are fired. मतलब अगर आप काम पे सही टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपको काम से निकाला जाएगा। तो आप अगर सही टाइम पे पहुंचो या फिर आप निकलने के लिए तैयार हो जाओ। दैट इज अ मीनिंग ओवर हियर। ओके, नाउ लेट मी नो दिस इज ऑफ द फॉर्म निगेशन P और Q। सो निगेशन P क्या होगा? You get to work on time. So what is negation P? You get to work on time. What is Q from this statement? You are fired. तो इसको हमने किससे कंपेयर किया? फर्स्ट स्टेटमेंट को निगेशन P से कंपेयर किया, सेकंड स्टेटमेंट को निगेशन Q से कंपेयर किया, और बीच में क्या है? और है। सो दिस स्टेटमेंट इज लाइक दिस, निगेशन P और Q। अभी गिवन स्टेटमेंट क्या है? निगेशन P और Q। देयरफॉर P क्या होगा? इसका निगेशन यू गेट टू वर्क ऑन टाइम, उसका निगेशन क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P देन? P का वैल्यू क्या होगा अगर निगेशन P इज यू गेट टू वर्क ऑन टाइम है? एनीवन? आज कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई आंसर नहीं दे रहा है, क्या हुआ? Anyone? Why it is so? What is the negation of P? P will be what? Negation of negation P.
negation P आपको दिया गया है, you get to work on time. What is then P? What is its negation? इसका negation क्या है? What is the negation of this statement? इसका negation आपको क्या मिलेगा? Is my voice audible? Hello? What is the negation of this statement? Come on, fast. Hello, is my voice audible? Yes, sir, it's audible. Then what is negation? इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या होगा? शेख सकलीन, what happened? Why you have not logged in? Why I have to input you? मुझे आपको अलाउ करना क्यों पड़ रहा है? तो जाओ, ठीक है, नहीं आपको बताना है, ठीक है. इफ यू गेट टू वर्क ऑन द टाइम, इसका निगेशन क्या होगा? यू डू नॉट गेट टू वर्क ऑन द टाइम. तो व्हाट इज दिस निगेशन? You do not get to work on the time. So this is your P. So equivalent version P implies Q क्या होगा? If you do not get to work on time, then you are fired. Is it matching with this statement? Yes or no? इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर आप काम पे अच्छे टाइम पे पहुंचो या फिर काम से निकलने के लिए रेडी हो जाओ. सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आप अगर काम पे वक्त पे नहीं आ सकते तो आपको निकाला जाएगा. दोनों सेम ही है, both are the same. That's for always remember this statement P implies Q is logically equivalent to negation of P or Q. The P implies Q is logically equivalent to negation of P or Q. इसको हमेशा मार्क करके रखो. This is the important. Mark this out. P implies Q is logically equivalent to negation P और Q. इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आने वाले हैं क्योंकि निगेशन जब आपको आप लिखना है P implies Q का, तो इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके ही हम लिखते हैं. Let us go further. Let us prove this. Why it is equivalent? I will make the truth table to show that P implies Q is logically equivalent to negation P or Q. What is P? True, true. False, false. What is Q? True, false, true, false. Anyone remember what is P implies Q table? P implies 2 का टेबल कैसे आता है? TFTT. First true, second false is false, and others are true. ऐसे रिमेंबर मत करो TFTT, सिर्फ इतना रिमेंबर करो कि ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू. तो आपका जो डेफिनेशन है वो याद करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है PQR आ जाता है तो 8 स्टेटमेंट आ जाते हैं. तो 8 स्टेटमेंट के लिए आपको जब टेबल लिखना पड़ता है तो TFTT यूज नहीं होता है. वहां पे TFTT वहां पे यूज नहीं होता है क्योंकि वहां पे क्या आएगा, जब आप 3 का टेबल लिखते हो तो P का एंट्रीज क्या आता है? चारों एंट्रीज ट्रू आता है. Q का एंट्री क्या आता है? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. आप कैसे लिखोगे फिर ट्रू P implies Q? R का एंट्री होगा. तो हमेशा क्या याद रखो? ट्रू implies false is false, ट्रू implies false is false, otherwise it is true. तो ऐसे याद रखना है P implies Q का टेबल. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी रिक्वायर फॉर RHS? RHS will require negation of P. negation of P क्या आएगा?
false false, true। FFTT. हाँ, और अभी इसको और इसको कंबाइन करना है और से, दैट इज सेकेंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम को आपको कंबाइन करना है कौन से ऑपरेशन से, और से। तो ट्रू और फॉल्स क्या आएगा? व्हाट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स और ट्रू क्या है? फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा? फॉल्स। ट्रू और False. ट्रू, ट्रू। और True. फॉल्स और ट्रू, ट्रू। True. So you can check that this column and this column are identical. Can I get these two columns are identical? If I get these two columns are identical, then what I can write? P implies Q is equivalent to negation of P और Q. So हमने स्टेटमेंट का एग्जांपल लेके भी देखा कि Q इक्विवेलेंट होते हैं, either you get work on the time or you will fire. That is the first statement which is of the form negation P or Q. और second statement को कैसे लिखा हमने? If you do not get to work on the time, then you will fire. So दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है. So this is by the truth table, which is by the example से भी हमने समझने की कोशिश की कि कैसे वो होता है. Why it is so? P implies Q, Q होता है negation P और Q. ओके अभी अगर वो ऐसा है तो क्या आप निगेशन लिख सकते हो इसका? व्हाट इज निगेशन ऑफ दिस P implies Q? The negation of this P then Q is equivalent to P and not Q. Okay, let me explain this particular thing. Negation क्या होता है P implies Q का? क्या होगा negation? What is P implies Q meaning? आपको क्या समझता है जब मैं बोलता हूँ if P then Q? क्या मीनिंग होता है? जब मैं बोलता हूं अगर P होगा तो Q भी होगा, राइट? मतलब क्या है, जब P ट्रू है तो मेरा Q ट्रू आना चाहिए. तो उसका निगेशन क्या होगा? अगर P ट्रू है और Q ट्रू नहीं है, P ट्रू है पर Q ट्रू नहीं है, तो ही उसका निगेशन मैं बोल सकता हूं कि उल्टा है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या मीनिंग करता है? अगर P होगा तो Q होगा ही होगा. उसका निगेशन क्या है? P हुआ है पर Q नहीं हुआ है. That is the negation. Why it is so? Let me write down this particular thing. I want to take negation of P implies Q. Right? I want negation of P implies Q. What is the equivalent form से मैं क्या बोल सकता हूँ? That is the negation of negation P or Q. Yes or no? अगर मुझे निगेशन दोनों साइड मैंने यहाँ पे रख दिया, P implies Q is equal to negation P और Q, दोनों साइड निगेशन रख दिया. अप्लाई द निगेशन. कैसे अप्लाई करोगे? डी मॉर्गन्स लॉ से अप्लाई करोगे. दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन P और का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, एंड निगेशन Q आ जाएगा, विच इज इक्विवेलेंट टू. So this is by what is the reason? De Morgan's law. The reason is De Morgan's law. Okay. अभी बताओ, what is negation of negation P? Negation of negation P is P and so what is the negation of P implies Q? Negation of P implies Q is P and negation Q. Is it okay now? Yes or no? Is it correct now? Yes, sir. ये किससे लिखा मैंने? How I written this statement? I have used the algebraic proof. और कौन सा तरीका होता है आपको प्रूव करने का? By truth table. Make a truth table for this.
show that negation of P implies Q same as negation of P and negation Q. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ negation of P implies Q is same as P and negation of Q. Okay. So let me make the truth table for this. कैसे बनाऊंगा मैं truth table? What are the columns? P, Q. P implies Q. Then what is the column? Negation of P implies Q. तो मेरा LHS हो गया. What is RHS बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा? Negation Q लगेगा. फिर मैं P and negation Q को combine कर सकता हूँ with and. Complete this truth table and show that it is equivalent. Complete this truth table. और आप WhatsApp ग्रुप में पोस्ट करो अभी. Take time 5 minutes and put it in the WhatsApp group. Yes, Mantasha has posted. Let me write what she have posted. Now tell me whether this is right or wrong. I have copied down what Mantasha has posted. और किसी को कोई अलग आंसर आ रहा है क्या? No, sir, it's correct, sir.
दिस इज करेक्ट, करेक्ट है, क्योंकि P implies Q, ट्रू implies फॉल्स की जगह पे फॉल्स होगा, बाकी सब जगह पे ट्रू होगा। देन हमने निगेशन लिखा, ट्रू का फॉल्स बनाया, फॉल्स का ट्रू बनाया। देन निगेशन Q लिखा, Q के जो भी है उसका उल्टा किया, ट्रू का फॉल्स बनाया, फॉल्स का ट्रू बनाया। देन बीच में क्या है, एंड है, एंड कभी फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स होता है तो ही फॉल्स होता है, सॉरी, जब दोनों ट्रू होता है तो ही ट्रू होता है। तो यहाँ पे P ट्रू है और यहाँ पे निगेशन Q ट्रू है, तो ये ट्रू आएगा, बाकी सब जगह पे फॉल्स आ जाएगा। ओके, so this is how ये two columns are identical, left hand side is identical are right hand side। so ट्रूथ टेबल से भी आपको निगेशन क्या मिला, अगर आपको निगेशन लिखना है P implies Q का, तो व्हाट इज निगेशन, P and negation Q। so ये याद रखो, this formula memorize, that is negation of P implies Q is equivalent to, क्या है फॉर्मूला, P and negation Q, and just P implies Q equivalent to क्या है, P implies Q is equivalent to negation of P और Q। ओके, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने कंडीशनल स्टेटमेंट में। so let us write the negation, write the negation of these two statements। if my car is in the repair shop, then I cannot go to the classes। so let me write a part, let P be the statement। what is P over here, P का वैल्यू क्या रहेगा, My car is in the shop. my car is in Repair shop. what is Q statement, what is Q statement here, I cannot get to the classes, I cannot, why it's so happened, get to the classes। okay, ये क्यों हो रहा है, क्यों आ रहा है, हेलो, शिट इसको ही हो रहा है ये, हेलो, Yes, sir. नहीं मैं चेक कर रहा था मेरा माइक, or anyways I don't know why it is echoing। okay, what is statement of the form, original statement is of the form P implies Q, right? Yes, sir. तो गिवन स्टेटमेंट पहले लिखो, गिवन स्टेटमेंट क्या है, P implies Q, therefore its negation क्या होगा, what is the formula for you have, negation of P implies Q क्या होगा, negation of P implies Q is equal to P P and and, negation. so write down the statement in this form, P and negation Q, P and negation Q, अगर मेरा P है my car is in the repair shop and Q is the statement I cannot get to the classes, so P as it is, my car is in repair shop
And what is Q statement? I cannot get to the classes, so negation क्या होगा? Cannot के जगह पे क्या आएगा? I can get to the classes. Okay, so how to write the negation of the statement? First, convert the statement into P implies Q, identify the statement P, identify the statement Q, and then apply the negation by the formula P and negation Q. Okay? अभी आप मुझे बताओ, what is P over here? What is P in the second statement? Anyone? Tara lives in the Athens. Athens is name of the place. What is Q? Tara lives in Greece. So Athens is a city and Greece is a country. Tara lives in the Greece. Okay. Now tell me, what is the negation of this statement? So we have negation of P implies Q is equivalent to P and negation Q. Therefore, negation क्या होगा? I will write negation is the statement. What is P and negation Q? Tara lives in a Greece. आपको भी इको सुनाई दे रहा है क्या मेरे वॉइस का? यस सर, बहुत इको हो रहा है. Yes, sir. Let me rejoin this meeting. Hello. हेलो. फिर भी इको ही हो रहा है. नहीं सर, अभी नहीं हो रहा है. अभी नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है ना? ठीक है. Sarah lives in Athens and यहाँ पे मुझे ये हटाना पड़ेगा. Negation Q, that is she does not live in Greece. So we have written the negation of P implies Q.
सो एग्जाम में इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट निगेशन ये लिख दिया, निगेशन वैल्यू लिख दिया तो भी मुझे मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं रिटर्न करके दिख रहा हूँ। इफ यू वांट द राइट डाउन द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, इफ there is heavy rain then I could not go to work. I could not यशवर्धन, आपका पढ़ाई कैसे होता है इतने आवाज में? I would not go to the work, कुड के जगह पे would लिखते हैं। I would not get to the work. What is negation? Directly बोलो। P, there is heavy rain and I would not get to the work. So I will write the negation directly. There is heavy rain. There is heavy rain and देन के जगह पे एंड लिखो और सेकेंड स्टेटमेंट का निगेशन करना है। निगेशन क्या होगा? आई वुड नॉट गेट टू वर्क, आई विल गेट टू वर्क। ओके, so this is how you can write negation directly। और आपको सिर्फ आंसर लिखना है, आंसर के ही मार्क्स है। ये सब एक्सप्लेनेशन लिखने नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट आपको कंफ्यूजन हो रहा है कहीं पे भी, नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखना है निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू का, तो आप लिख सकते हो कि हाँ इसका निगेशन ये होता है, पी एंड क्यू, पी एंड निगेशन क्यू। तो पी लिखो, क्यू लिखो एंड देन सिस्टमैटिकली करोगे तो आपको निगेशन मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज अबाउट द राइटिंग डाउन निगेशन ऑफ विच स्टेटमेंट? कंडीशनल स्टेट। और कुछ है? नहीं है। Let's move on to the next topic. There are three variants of conditional statement. For example, मैं डायरेक्टली लिख के ही देता हूं यहाँ पे एक एक करके बताते हैं। P implies Q. I have one more statement I can write like this. P implies negation Q. Then I have the statement negation of Q implies negation P. And I have one more option to write the statement Q implies P. ओके, तो ये जो Q implies P होता है ना, इसको हम बोलते हैं कन्वर्स। Q implies P को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्स। निगेशन ऑफ P implies negation Q, इसको बोलते हैं इनवर्स। निगेशन ऑफ P implies negation Q, इसको बोलते हैं इनवर्स। एंड निगेशन ऑफ Q implies negation of P, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्ट्रापोजिटिव। तो समझा है तीनों वेरिएंट? P implies Q is the original statement. If you have Q implies P, then it is called converse. If you have negation of P implies negation Q, it is called inverse. And if you have negation of Q implies negation of P, then it is called as contrapositive. तो ये तीन स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। You have to remember these three statement. Converse क्या होता है, inverse क्या होता है, contrapositive क्या होता है। So let's see one by one. The contrapositive of the conditional statement, if P then Q, is if negation of Q then negation of P. That is, P implies Q का contrapositive होगा, negation of Q implies negation of P. Okay, तो इसको हम लोग contrapositive बोलते हैं। What is P implies Q mean? मैंने आपको बार बार बताया P implies Q का मतलब क्या होगा? अगर P हुआ तो Q भी होगा। That is the meaning of P implies Q.
निगेशन ऑफ सॉरी कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या बोलता है, अगर Q नहीं हुआ तो P भी नहीं होगा। उसी स्टेटमेंट का अनदर फॉर्म है, अगर Q नहीं हुआ तो P भी नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने क्या बोला है, अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब बोलोगे कैसे होगा, अगेन आप कैसे करोगे इसको, लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करना है, कैसे करोगे, व्हाट डज दिस मीन, P implies Q conditional statement is logically equivalent to its contrapositive। contrapositive क्या है, negation of Q implies negation of P। okay, let me write negation P, let me write negation Q। okay, अभी मुझे बताओ what is the logical statement originally, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P implies Q, राइट हैंड साइड क्या है, negation of Q implies negation of P। तो लेट अस राइट द ट्रूथ टेबल। आपको पता है ट्रूथ टेबल कैसे लिखते हैं, अभी बहुत प्रैक्टिस हो गया आपका, अगर जिसने किया है खुद से तो उसका हो गया रहेगा, जिसने नहीं किया है मैं कुछ नहीं कर सकता। मैथ्स का ऐसे आप जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं होगा वो। आप एग्जाम में सोचोगे अगर आपको आएगा डायरेक्टली तो नहीं आने वाला है। यू हैव टू टेक प्रैक्टिस सीरियसली। ओके, व्हाट इज P implies Q, ट्रू implies true is true, ट्रू implies false is false, सॉरी हाँ बराबर, false implies true is true, false implies false is true। now let me see negation of Q, that is this column, that is fourth column, I have to implies third column, so false implies false, क्या होगा ऑप्शन, false implies false is true, true implies false, true implies false, क्या होगा ये ऑप्शन, true implies false क्या होता है, it is false, false implies true, always true, true implies true, it is true। so what you will get, the columns P implies Q and columns negation of Q implies negation of P are identical, these two columns are identical। जस्ट इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको जब ट्रूथ टेबल याद करना है तो TF TT की तरह याद मत करो ट्रूथ टेबल, आपको याद क्या करना है, इंप्लाइज में फॉल्स इंप्लाइज ट्रू इज फॉल्स, बाकी सब जगह पे फॉल्स इंप्लाइज ट्रू इज फॉल्स, बाकी सब जगह पे ट्रू है। एंड का ट्रूथ टेबल याद करना है तो कैसे करोगे, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, बाकी सब फॉल्स है, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, बाकी सब फॉल्स है। और का टेबल याद करने की टेक्निक क्या है, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू है, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू है। so that is the key index which you have to be taken care of। अंडरस्टूड ये, तो इसीलिए मेरे को क्या देखना है, यहाँ पे ट्रू है और ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स कर रहा है तो क्या होगा, आंसर इज फॉल्स, ये आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे क्या है, P ट्रू है Q फॉल्स है, तो P इम्प्लाइज Q क्या होगा, फॉल्स होगा। सो ये जो टेबल है वो याद करने का यही तरीका है, ये दो इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। ओके, तो ये दो कॉलम्स आइडेंटिकल है तो इसीलिए conditional statement is always equivalent to its contrapositive। now let us write down the contrapositive of these two statements। क्या लिख सकते हो आप contrapositive, फर्स्ट स्टेटमेंट का contrapositive बोलो, दिस इज ऑफ द फॉर्म P implies Q का फॉर्म दिया है, आपको contrapositive में कौन सा फॉर्म लिखना है, negation of Q implies negation P। तो बताओ मुझे क्या आएगा negation of Q, what is Q statement, hello anyone,
If Howard can swim across the lakes, then Howard can swim to the Iceland. कैसे लिखूंगा मैं इसका निगेशन? ये स्टेटमेंट का निगेशन बोलो, सेकंड स्टेटमेंट जो है उसका निगेशन बोलो, क्या आएगा? Howard cannot swim to the Iceland. Howard cannot swim. Can के जगह पे हम क्या लिखेंगे? Cannot swim to the Iceland. Then क्या लिखोगे? निगेशन ऑफ Q implies निगेशन P. P क्या है? Howard can swim across the lake. तो उसका निगेशन क्या आएगा? He cannot swim across the lake. Across the lake. Okay. Now tell me B form. Directly बताओ मुझे क्या आएगा? If बताओ मुझे डायरेक्टली क्या आएगा बी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव? Tomorrow is not Monday. बराबर है. इफ टुमारो इज नॉट मंडे, देन क्या होगा? Today is not yesterday. नहीं, एस्टरडे क्या है यहाँ पे? Easter. ईस्टर. Today is not Easter. ईस्टर इज अ क्रिश्चियन फेस्टिवल. देन टुडे इज नॉट Not Easter. ईस्टर. हो गया ये. ओके. Then one more concept, that is converse and inverse. Then we can stop. Okay. So write down converse and inverse. Converse क्या होता है? Q implies P. And inverse क्या होता है? Negation P implies negation Q. Okay. So if you are given the statement P implies Q, उसका converse क्या होगा? Converse क्या होगा? Q implies P, उल्टा कर देने का. और इनवर्स क्या होगा? निगेशन ऑफ P implies negation Q. सो ये तीनों चीजें याद रहेंगी. कन्वर्स का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? इनवर्स का मीनिंग क्या है? ठीक है. अभी हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव ओरिजिनल स्टेटमेंट के साथ इक्विवेलेंट होता है. बट क्या वही हम लोग Q implies P के बारे में बोल सकते हैं या फिर इनवर्स स्टेटमेंट के बारे में बोल सकते हैं क्या? वैसे व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? लेट अस राइट ना. आपको सोचने से क्या है? आपको प्रूव करना पड़ेगा जो भी आप सोच रहे हो. लेट अस राइट P implies Q original statement and converse statement is Q implies P. Let us write the truth table. True true, true false, false true and false false. करेक्ट. ये चार दिए हैं. P implies truth टेबल याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया? True implies false is false, बाकी सब true. करेक्ट. That is over here. Q implies P. Q ट्रू है, P फॉल्स है. ऐसा कौन सा कंडीशन है? थर्ड रो का कंडीशन है. ट्रू implies फॉल्स क्या है? फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है. ओके. नाउ लेट अस सी. यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है. और यहाँ पे ट्रू ट्रू आइडेंटिकल इंट्रीज है. ये जो इंट्रीज है नॉन आइडेंटिकल इंट्रीज है. देयरफॉर दिस आर नॉट आइडेंटिकल.
तो ये आपको क्या मिला? कन्वर्स इज नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल स्टेटमेंट. लेट अस राइट डाउन द सेम फॉर इनवर्स. सॉरी, मैं ब्लैक की लेता हूं यहाँ पे. Let us make the second table. PQ, P implies Q same रखो. Negation P, negation Q, and last column will be negation of P implies negation of Q. Okay. तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ. TF TT. What is negation P? क्या आता है negation उल्टा करने का? False false true true, false true false true. अभी मुझे बताओ, negation of P implies negation Q. negation P true है, negation Q false है, तो ये क्या आएगा? false आएगा. बाकी सब जगह पे ये क्या आएगा? true आएगा. If hypothesis is false, conclusion is always, result is always true. Okay. तो ये आपका टेबल बन गया. अभी ये दोनों को कंपेयर करो. If you compare this table, what do you get? यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है. ओके. यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है. बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? प्रॉब्लम इज हियर. यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू आया है. यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स आया है. तो आपको क्या मिलेगा? व्हाट डू यू गेट? These are not identical. These two are not identical. Therefore, converse and inverse are not identical to original statement. Remember this. Converse and inverse is not identical to original statement. So I will write over here. P implies Q is identical with its contrapositive statement, that is negation of Q implies negation P. It is not identical to converse statement, that is Q implies P, and this statement P implies Q is not identical with its inverse statement, that is negation of P implies negation Q. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड स्पेसिफाई कर देता हूँ. तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, कॉन्ट्रापोजिटिव के साथ क्या रिलेशन आता है? कॉन्ट्रापोजिटिव के साथ इक्विवेलेंट आता है. इसके साथ कन्वर्स के साथ इक्विवेलेंट नहीं आता है. इनवर्स के साथ इक्विवेलेंट नहीं आता है. अंडरस्टूड दिस? कंडीशनल स्टेटमेंट के तीन वेरिएबल्स होते हैं. वन इज कॉन्ट्रापोजिटिव, अदर इज कन्वर्स एंड थर्ड इज इनवर्स. तो ये तीन वेरिएंट में से कॉन्ट्रापोजिटिव के साथ क्या आता है? लॉजिकल इक्विवेलेंस आता है. कन्वर्स और इनवर्स के साथ लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं आता है. We will see how to write this converse and inverse, and then we will see the mixed example as well in the next lecture, that is on Friday. कल का लेक्चर मेरा आरती मैम लेगी. ओके. टाइम टेबल में मेरा दिया है, मैंने वो आरती मैम का ट्यूसडे का लेक्चर लिया था. ओके. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. Let me download the attendance, then you can leave. Okay, you can leave now. Thank you, sir. Okay, Thank bye you, sir. everyone.